स्टार्ट कर दें, ठीक है. राइट, व्हाट इज प्रियम्बल? राइट, a preamble is an introduction to any document which highlights the basic principles and the structure of the document. The preamble of India's constitution. The preamble of India's constitution is derived from the objective resolution adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947. ब्रैकेट में एक और डेट लिखेंगे, 13 दिसंबर 1946, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये डेट ज्यादा पूछता है. 13 December 1946 is the date on which the objective resolution was laid before the assembly by Nehru. On 22nd Jan it was adopted. So just write, it was laid by Nehru. Next paragraph. Just give a subheading, significance of preamble. In this, write first point, it signifies the value of popular sovereignty. सचिन ऊपर हो गया क्या? मैंने भेज दिया निशांत को. Popular sovereignty. Put a dash and write, we the people of India. We the people of India. Second point, right? It signifies the fact that Indian state is sovereign, secular,
socialist, democratic, and republic, and रिपब्लिक. इसमें सब पॉइंट्स लिखेंगे. राइट. sovereign means that India shall not be dictated by any external power. ठीक है. Now look at the preamble. The first question would be, is it necessary to add preamble in a constitution? जरूरी है? Is it necessary? Yes or no? नहीं. जरूरी किस? इंट्रोडक्शन ही तो है. इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, which served as the constitution for India before independence, it had no preamble. So it is not necessary to add. At the end of the day, it is a preface. जैसे आपकी किताब में every book that you buy, there is a preface written, right? So it is also kind of introduction which will sum up the philosophy of the constitution. Okay. Now the second question would be कि जैसे आप जो भी बुक खरीदते हैं उसमें प्रीफेस दिया रहता है. हाउ मेनी ऑफ यू रीड दैट प्रीफेस? हम नहीं पढ़ते. वी डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स एंड द फर्स्ट चैप्टर. वी डोंट रीड दैट प्रीफेस. व्हाई? बिकॉज वी बिलीव दैट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इसीलिए तो नहीं पढ़ते. यदि हमें पता रहेगा कि क्वेश्चन प्रीफेस से भी आ सकता है, देन वी विल रीड अबाउट इट. बट वी डोंट रीड द प्रीफेस बिकॉज वी बिलीव दैट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. Preamble is kind of preface to the constitution, but it is probably the most important part. Okay. Now let us look at the text of the preamble. पहली बात है कि दोनों टेक्स्ट में आपको कुछ डिफरेंस दिख तो नहीं होगा, मे बी फ्रॉम दैट डिस्टेंस. डिफरेंस को स्पॉट कर पा रहे हैं अदर देन द डिजाइन? क्या डिफरेंस कुछ दिख रहा है दोनों में? दोनों के टेक्स्ट में कुछ डिफरेंस? ठीक है. सो द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और यहाँ पे यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. जो इंटेग्रिटी वर्ड, यूनिटी इज देयर, इंटेग्रिटी वर्ड जो है वो नहीं है. राइट. primarily socialist and secular. Now this is the preamble that we originally adopted. This is the preamble that we are getting after the 42nd amendment. Any idea 42nd amendment कब हुआ था? 1976. इस डेट को ऐसे याद रखिए कि 42nd अमेंडमेंट से एक और इम्पोर्टेंट चीज हुआ था. बहुत सारी चेंजेस किए गए थे. एक इम्पोर्टेंट चेंज ये हुआ था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे संविधान में. राइट. इंटरेस्टिंग बात यह है कि फंडामेंटल ड्यूटीज तब जोड़े गए जब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया इमरजेंसी टाइम. बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट्स. स्टेट हमेशा चाहेगी कि राइट्स कमजोर हो, ड्यूटीज मजबूत हो. बिकॉज ड्यूटीज आर योर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द स्टेट, rights are state's obligation towards you. ठीक है. So it was during the emergency time ये change हुआ था. Now let us see of the words text written here. First thing is we the people of India. It shows popular sovereignty. That means who is the sovereign power? We the people of India. We have given the power to ourselves. Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign country. Sovereign means
that India shall not be dictated by any external power. Now before this, आपको लगेगा ये तो बहुत नॉर्मल चीजें होता ही है, but before we adopted the constitution, it was the British Parliament which was making law for us. But after the adoption of the constitution, we became sovereign power. अब इस पे किसी को कंफ्यूजन रहता है कि सर इंडिया इज नॉट अ सॉवरेन कंट्री बिकॉज हमें बाहर के मैंडेट्स को फॉलो करना पड़ता है. लेट अस से वी आर पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ. डब्ल्यूटीओ ने जो कहा वो हमें फॉलो करना पड़ेगा. वी आर पार्ट ऑफ यूएन. यूएन ने जो कश्मीर में कहा उसको फॉलो करना पड़ेगा. सो हाउ कैन वी कॉल आवरसेल्फ एज द सॉवरेन पावर? We can call ourselves our sovereign power despite these bindings, क्योंकि decision of joining UN was ours. तो यदि आप कोई भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रक्चर में, तो रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा ना. लेट अस से you decided to join the institute for this course. Now whatever are the rules for this, you'll have to follow it. So India is a sovereign country. India is a socialist country. Socialism शब्द का मतलब पता है? What is socialism? कॉमन पीपल आर वेलफेयर. ठीक है, सोशलिज्म कॉमन पीपल विल वेलफेयर. अब एक लाइन में यदि बेहतर डेफिनेशन देना हो तो आई वुड से सोशलिज्म इज एन आइडियोलॉजी, फिलॉसफी विच प्रेफर्स सोसाइटी ओवर इंडिविजुअल. मतलब कि मान के चलिए कि यदि स्टेट के पास 10 लाख रुपए है, so it would better distribute it amongst 1,000 people rather than giving it to somebody, एक इंसान को देने से on the basis of merit. So socialism means when you are prioritizing society over individual. Capitalism में क्या है? Individual is being prioritized over society. It means यदि मैं बहुत मेहनत कर सकता हूं, so maybe I will have 10 cars in my house. But socialism says कि चाहे कोई कितना भी मेहनत करे, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड. सो मेहनत सभी करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर विल बी यूनिफॉर्मिटी. यदि मैं ज्यादा अर्न कर रहा हूं, आई विल पे मोर टैक्स टू द गवर्नमेंट व्हिच विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड. जैसे इंडिया में क्या है, वी हैव प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर. जो अधिक कमाते हैं वो अधिक टैक्स देते हैं, जो कम कमाएंगे कम टैक्स देंगे, जो बिल्कुल नहीं कमाएगा कोई टैक्स नहीं है, बल्कि सरकार उसको कुछ सब्सिडी देने वाली. Now you tell me one thing, सोशलिज्म अच्छा है या फिर कैपिटलिज्म? Which one is better, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म? मिक्स्ड नहीं, बट मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया मिक्स्ड का. If you have to select between capitalism and socialism, which one you prefer? हाँ, सोशलिज्म कितने लोग बोल रहे हैं? सोशलिज्म क्यों बोल रहे हैं सोशलिज्म? You will prefer socialism. Why? अरे बताओ, why will you prefer socialism? क्या thought process था? लोगों को बेहतर लाइफ मिल सकती है, right? See, again the answer is of course what you said. We should start with socialism, but a point should come when one should switch to capitalism. आपको पता होना चाहिए कि सोशलिज्म को छोड़ के कैपिटलिज्म में कब यू हैव टू जंप. इफ यू डोंट जंप ऑन टाइम देन यू विल फेस प्रॉब्लम. जैसे जब भी लेट अस से द फैमिली इज इन द इनिशियल स्टेज, तो संयुक्त परिवार होता है, जॉइंट फैमिली होती है. सिस्टम ये होता है, जिनका रूरल बैकग्राउंड होगा उनको पता होगा कि जो कमा सकते हैं वो कमाएंगे. द एंटायर इनकम वुड गो टू द हेड ऑफ द फैमिली एंड देन देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, but this system will work only till some time. A point will come when the person who is earning will realize कि मैं दूसरों के लिए क्यों कमाऊं. ठीक है, मान के चलिए कि आपका संयुक्त परिवार है, आप यहाँ दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं और आपके फैमिली में कोई है जो पर मंथ 80,000 1 लाख रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहा है और आप पर मंथ 20,000 रुपए घर से मंगा रहे हैं. तो एक दिन आएगा कि वो पूछेंगे ना कि कब तक पैसे भेजे जाए इनको, isn't it? So questioning will come. In fact, there's a case study that one of the professors, he was teaching a batch of MBA students and he asked that which is better, socialism or capitalism? So जो ideal students थे उन्होंने कहा सर socialism अच्छा है. Obviously socialism, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को welfare हो रहा है, कोई खाए बिना नहीं मरेगा.
Nobody will die out of hunger. And he said, fine, if socialism is better, many people said socialism better hai. He find if socialism is better, let us try this out in the class. उन्होंने कहा कि next 1 month हम एक experiment करेंगे, wherein क्लास में मान के चलिए 50 स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास टेस्ट होता है. सो व्हाट वी विल डू इज दैट जो भी हाईएस्ट मार्क्स आएगा, लोएस्ट मार्क्स आएगा, वी विल कैलकुलेट एवरेज और सभी को बांट देंगे. मतलब आउट ऑफ 100 किसी के 95 आ रहे हैं, किसी के 20 आ रहे हैं, एक एवरेज कैलकुलेट करके सभी स्टूडेंट्स को बांट दिया जाएगा. सोशलिज्म में यही तो होता है कि आप जरूरत से ज्यादा है तो आपसे लेके और जिसको कम है उसको दे दिया जाता है. एवरीबडी अग्रीड ऑन दैट. आफ्टर 1 month or 2 months, whatever was the time duration, it was realized कि जो हाईएस्ट मार्क है ना वो ऐसे डिक्रीज हो गया. हाईएस्ट मार्क्स जो क्लास में आता था डेट डिक्लाइंड, बिकॉज पहले टेस्ट में टॉपर ने जो भी मेहनत किया ही गॉट 95, एवरेज होकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ठीक है, बट आफ्टर सम पॉइंट ही रियलाइज्ड कि मैं ही मेहनत क्यों करूं, व्हाई शुड आई वर्क देयर. मैं दिन रात मेहनत करूं और लास्ट में मेरे को 95 वाले को भी मिल रहा है 50 और जो 25 वाले उसको भी 50 मिल रहा है. सो एज अ होल द टॉपर्स मार्क्स डिक्लाइंड और जो टोटल मार्क्स है वो भी डिक्लाइन कर गए. इट शोज दैट दिस सिस्टम डज नॉट वर्क एंड द प्रैक्टिकल एग्जांपल इज यूएसएसआर. यदि ये इतना अच्छा रहता तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं होता एंड अमेरिका वुड नॉट हैव बीन द सुपर पावर. But practically देखा गया America emerged as a superpower and USSR disintegrated. It means things don't work like this. Even China, it is not a socialist country. वो अपने आप को कहते हैं it is a socialist country with Chinese character. Socialism with Chinese characteristic. In fact, India के एक बहुत senior left leader थे, recently departed. He used to say that Chinese Communist Party जो है वो डीटीसी बस की तरह है. इट गिव्स द इंडिकेटर ऑफ लेफ्ट बट इट गोज राइट. लेफ्ट का मतलब है कि इक्वालिटी की बात करेगा और करता है क्या, मार्केट फंडामेंटल्स. इंडिया इज एन एग्जांपल. वी स्टार्टेड विद अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, बट बाय द एंड ऑफ 80s एंड द स्टार्ट ऑफ 90s वी रीच्ड एट अ पोजीशन wherein Indian economy was not growing at all. Nobody was ready to give us money. एंड फिर हमें स्विच करना पड़ा. बट हम कैपिटलिज्म शब्द का यूज नहीं करते हैं बिकॉज इंडिया में कैपिटलिज्म इज अ टैबू वर्ड, इजंट इट. कैपिटलिज्म को नेगेटिव तरीके से देखा जाता है. यदि किसी ने बहुत पैसे कमा लिए हैं तो 90% पीपल विल सी एट दैट पर्सन और लगेगा कि कुछ तो इसने गलत किया होगा. वी कैन नॉट थिंक कि कोई ईमानदारी से कमा सकता है. पीपल लाइक ट्रम्प कैन नेवर विन इलेक्शंस इन इंडिया द वे ही फ्लॉन्ट्स हिज वेल्थ. ठीक है, यहाँ पे यदि यहाँ तो लोग छुपा के रखते हैं, जानबूझ के गरीब दिखाते हैं खुद को. ठीक है, देयर वाज अ वेरी सीनियर लीडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. उनके बारे में कहा जाता था कि ही वुड गेट अ प्रेस्ड शर्ट और उसको क्रम्बल कर देते थे फिर पहनते थे, बिकॉज इंडियन वोटर्स हेट एलिटिज्म. इंडियन वोटर्स को ऐसा कोई चाहिए जिन्हें लगे कि द पर्सन हैज स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रास रूट एंड सो एनीवे. So socialism basically means you are prioritizing society over individual. ठीक है. Indian context में socialism का मतलब है that Indian state would be the welfare state. Next we have secular. India is a secular country, right? Secular का क्या मतलब है? Are equal. All religions are equal. ठीक है. तो सेक्युलरिज्म एक्चुअली जो फर्स्ट मीनिंग है ना, there are different meanings of secularism also. One meaning is that state has nothing to do with religion. Those who are from political science or will read political science, एक thinker के बारे में पढ़ेंगे, Machiavelli. Machiavelli said that religion and politics should be completely separated. यानी यदि state आपको देख रही है तो आपका रिलीजन क्या है, इट शुड नॉट मैटर. कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, जैसा कि फ्रांस में फॉलो होता है. फ्रांस में आपका रिलीजन क्या है, इट इज नॉट
all important. This is called as the complete separation model. What we follow in India is the equidistance model. All religions are equal for the state, या फिर जिसको हम सर्वधर्म संभाव बोलते हैं कि सारे रिलीजन जो होंगे स्टेट के लिए बराबर हो. सो इफ द स्टेट इज हियर देन ऑल रिलीजन्स आर एट इक्वल डिस्टेंस. बट आपसे एक क्वेश्चन ये है कि क्या स्टेट के लिए, इंडिया में क्या स्टेट के लिए सभी रिलीजन बराबर हैं? माइनॉरिटीज को तो स्पेशल राइट्स मिले हुए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है. दोज हु आर फ्रॉम डीयू आपको पता होगा सेंट स्टीफेंस में क्रिश्चियंस के लिए है, जीसस एंड मेरी क्रिश्चियंस के लिए, देयर खालसा कॉलेज जहाँ पे सिख के लिए है, जामे नो. ठीक है, अभी एएमयू का केस चल रहा था. सो व्हाई माइनॉरिटीज? इफ माइनॉरिटीज हैव स्पेशल राइट्स तो आप कैसे कह सकते हैं कि स्टेट सभी रिलीजन को बराबर या फिर इक्वल वे में ट्रीट कर? सो इट इज डेफिनेटली नॉट द इक्विडिस्टेंस मॉडल. एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं पॉलिटिकल साइंस के, राजीव भार्गव. ठीक है, राजीव भार्गव सेज दैट व्हाट वी फॉलो इन इंडिया is neither the complete separation nor the equidistance, rather it is the principled distance, सैद्धांतिक दूरी, principal distance. जिसे आवश्यकता अधिक है स्टेट उसके लिए स्पेशल प्रोविजन करेगा. ठीक है, सो सेक्युलरिज्म इन इंडिया फर्स्ट मीन्स दैट the state will not, there will be no particular religion of the state. Secondly, it means that every individual will have the freedom to mold his or her relation with God. तीन कैटेगरी के लोग होते हैं. फर्स्ट, मैं रिलीजियस हूं, हिंदू धर्म को मानता हूं, फर्स्ट कैटेगरी. फिर सेकेंड कैटेगरी जो ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, और एक थर्ड कैटेगरी है जो कहते हैं हमें पता नहीं है भगवान है भी या नहीं. नाउ द स्टेट विल ट्रीट ऑल ऑफ देम इक्वली. आप रिलीजन को माने, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को माने, या फिर आप कहें कि भगवान नहीं है, या फिर आप कहें कि भगवान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, द स्टेट इज नॉट गोइंग टू ट्रीट देम डिफरेंटली. सभी बराबर, एंड एवरीबडी इज फ्री टू फॉलो द रिलीजन. In fact, conversions are also allowed provided that it should not be a forced conversion. In fact, B.R. Ambedkar himself converted from Hinduism to Buddhism. Then democratic, self-explanatory है that people will decide. Republic, हमने last class में discuss किया, the head of the state would be elected indirectly or directly, we'll see. Now this, तो यहां तक पता चला the source of power. This is the nature of the state. Now this will tell you the objective of the state. Justice सबसे पहला, और ये ऑर्डर देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस है, ऑब्जेक्टिव है, वो है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जिसको हम कॉम्प्रहेंसिव जस्टिस कहेंगे. सोशल, इकोनॉमिक, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. अब यहां पे जब ये शब्द जोड़ा गया सेक्युलर बाय 42nd अमेंडमेंट, सम पीपल अपोज्ड इट. इनफैक्ट रिसेंटली ये पिटीशन था सुप्रीम कोर्ट में, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उस पे अपना जजमेंट दिया है कि बोथ दिस वर्ड्स शैल रिमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल, बिकॉज द ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड कि जब एक बार आपने ये लिख दिया है कि देयर शुड बी लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, व्हाट इज द नीड टू पुट दिस वर्ड सेक्युलर? सेम चीज तो है. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship means secular है, फिर आपने secular शब्द क्यों जोड़ा? So if you go into the politics of this word secular, see the timing 1976, और scholars का ये मानना है कि during the emergency period एक perception बना था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ that government is against minorities, Muslims. और वो परसेप्शन भी क्यों बना था? बिकॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ संजय गांधी अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज हैपनिंग, जिसके तहत ऐसा माना गया था कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है. दैट मींस द स्टेरिलाइजेशन वर हैपनिंग, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन. एक टारगेट्स दिए जाते थे चीफ मिनिस्टर्स को. चीफ मिनिस्टर्स
डिविजनल कमिश्नर्स को टारगेट देते थे, डिविजनल कमिश्नर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बीडीओ को, and there used to be in targeted manner the male sterilization in order to negate out such perception. ऐसा कहा जाता है कि सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। सोशलिस्ट शब्द क्यों जोड़ा गया? इंदिरा गांधी वांटेड, जो उनका नारा था गरीबी हटाओ 1971 में, she wanted to convey to the people explicitly that the government is committed towards socialism, that is welfare of the majority. So the liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity. Again, this word fraternity means brotherhood. It is important because you are saying brotherhood उस कॉन्टेक्स्ट में जहां पे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया जाता है कि आप बराबरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड इन द लास्ट द डिटेल हैज बीन गिवन दैट कब हमने इसको एडॉप्ट किया, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब लास्ट क्या लिखा पॉइंट आपने? सॉवरेन, ठीक। नेक्स्ट राइट, socialist state, socialist state is a welfare state that prioritize society over individuals. Next point, right? Secular means every individual has equal right to mold his relations with God. इसी में लिखेंगे अनलाइक यूरोपियन कंट्रीज, India does not follow complete separation model. Does not follow complete separation model. Next, right? Democratic means government shall be elected by the people of India, by the people of India. Next, right? Republic means the head of the state shall be elected. Next point, right? The preamble mentions following objectives of the state
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट, इसमें फर्स्ट सब पॉइंट राइट, substantive idea of justice, substantive idea of justice, that is justice, social, economic, that is justice, social, economic and political. एक एक लाइन के बारे में लिख देंगे. इफ देयर इज अ स्कोप ऑफ सब पॉइंट्स हियर आल्सो राइट. सोशल क्या है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल एक लाइन लिखिए राइट. सोशल जस्टिस मींस, social justice means no discrimination on the basis of social identity, social identities like gender. ठीक है. Again, I have deliberately used this word gender क्योंकि gender जो है एक social term है. Sex is a biological term. Gender is a social term because जब उसके साथ आप discrimination, perception मिला देते हैं, then sex become gender. In fact, there's a very famous statement that you read in feminism, that one is not born woman but is made woman. So gender is a social term. Gender, comma, religion, caste, language, etc. Language, etc. Second sub point, right? Economic justice means each Indian has equal claim on the resources of this country. The resources of this country. Can you think of any constitutional body जो ये इंश्योर करती है कि नीति आयोग? नहीं, नीति आयोग ये नहीं करते. नीति आयोग जो है एक्चुअली इट इज अ बॉडी विच सजेस्ट, एक थिंक टैंक जो कि गवर्नमेंट को ये बताती है कि पॉलिसीज ऐसी बननी चाहिए राइट. इट्स नॉट नीति आयोग. एनी कोई पर्टिकुलर बॉडी है जो इस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि रिसोर्सेस का सही उपयोग हो. जस्टिस डिपार्टमेंट में वो रिसोर्सेस से रिलेटेड नहीं है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं. आपने सीएजी का नाम सुना है ना? सीएजी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 148 और जिसका मैंडेट ये है, यू विल बी सरप्राइज कि जो सीएजी होता है उसका जो ओथ है इज सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज. सीएजी का जो ओथ है सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज एंड दैट इज टू uphold the constitution, protect the constitution. So इससे आप समझ सकते हैं कि सीएजी कितना इंपॉर्टेंट ऑफिस है. सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. तो जिस तरीके से यूपीएससी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग मेरिट in the system, similarly CAG is responsible for ensuring democracy in the system. ठीक है. CAG का बेसिकली काम क्या है? It will look into the accounts of the government और यहाँ कहीं भी ऐसा लगेगा कि there has been corruption, then it will raise the flag. ठीक है.
इनफैक्ट सीएजी केवल ये नहीं देखता है कि वेदर द मनी स्पेंड देयर इज अ बिल अक्रॉस दैट और नॉट। मतलब ऐसा नहीं है कि यदि आपने 1000 सीआर खर्च किए और आपने उसका बिल दिखा दिया, सो ऐसा नहीं है कि सीएजी मान जाएगा कि कोई करप्शन नहीं हुआ। आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए ना, 1000 करोड़ खर्च हुए, आपने बिल दे दिया, मान जाना चाहिए। सीएजी विल ऑल्सो लुक कि क्या ये 1000 करोड़ रुपए और एफिशिएंट तरीके से खर्च हो सकते थे क्या। यानी यदि आपने 1000 करोड़ में 1000 टैंक्स खरीदे हैं, लेट अस अज्यूम, ठीक, सीएजी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या 1000 करोड़ में 2000 टैंक्स खरीदे जा सकते हैं। इफ यस, देयर इज अ करप्शन ऑफ दैट 1000 सीआर, and that's why this is called as the performance audit. You must have heard about the 2G spectrum, जो करप्शन हुआ था, स्कैम 2G स्पेक्ट्रम, उसमें सीएजी ने बताया कि देयर हैज बीन 1.676 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली परफॉर्मेंस ऑल्सो। सीएजी इज द बॉडी responsible for ensuring that there is an economic justice. Next point, right? Political justice means everybody has equal claim to political offices and universal adult franchise and universal adult franchise। ठीक है, अब पॉइंट्स में आ लीजिए जो हम लिख रहे थे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट में पहला हमने जस्टिस लिखा था, नाउ राइट सेकंड लिबर्टी। लिबर्टी एज इट इज लिख देंगे, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship। Self-explanatory है। Next, right? Fraternity, that is brotherhood। Next, unity and integrity of the nation। एक पैराग्राफ लिखेंगे, the preamble also mentions mentions 26th November 1949 as the date of adoption of the Constitution। Adoption of the Constitution। Now, this is the reason why preamble has been referred to as the identity card of the Constitution। क्योंकि इतना पढ़ेंगे आप तो कुछ आइडिया लग जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो। यू विल नॉट गेट द कंप्लीट आइडिया, बट जितना डिटेल आईडी कार्ड पे मेंशन रहता है व्हेन यू आर एज अ स्टूडेंट, तो आपके आईडी कार्ड पे आपका नाम, रोल नंबर, ओके, द बैच ईयर, कॉलेज नेम, इतना तो लिखा रहेगा। सो मे बी somebody will not able to know
कि आपके ग्रेड्स क्या है, आईडी कार्ड पे ग्रेड्स और परसेंटेज तो लिखा नहीं रहता, तो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर, हाउ रेगुलर यू आर, इतना तो नहीं पता चलेगा, बट एटलीस्ट यू आर अ स्टूडेंट, विच यूनिवर्सिटी, विच कॉलेज, विच डिपार्टमेंट, इतना तो पता चल जाता है. Similarly, when you read preamble, you get some idea about the nature of the constitution. So it has been called as the identity card. किसी ने इसको horoscope of the constitution कहा है. Somebody says that it is the most beautiful or important jewel of the constitution. तो different तरीके से इसको define किया गया है. Now, when we adopted the preamble, so primarily there were 4 questions which came as a debate on preamble. The first question was that is preamble or can preamble be used for the interpretation of the constitution? क्योंकि preamble जो है वो enforceable तो है. Enforceable means you cannot go to the court saying कि preamble में जो लिखा हुआ है वो हो रहा है, नहीं हो रहा है. You cannot say this. It is not enforceable. So when the interpretation of the constitution is happening, should the court look into the preamble या फिर preamble को ignore किया जाए? जैसे मैंने बताया ना, preface को हम ignore कर देते हैं. तो ये मान के चलिए कि यदि कोई क्वेश्चन preface से आ जाता है तो आप क्लेम करेंगे ये क्या है, तो चैप्टर से नहीं है तो preface से आ. Second thing is that is preamble the part of the constitution? यदि है तो उसमें जो लिखा होगा enforceable. Third is that can preamble be amended? And the fourth is, which has been settled very recently, that should the words secular and socialist remain in preamble? यही 4 debates रहे हैं preamble से जुड़ा. ठीक है. Now when Supreme Court is answering this question, we'll see an evolution in that approach of the Supreme Court. जब ये question सबसे पहले Supreme Court के पास आया, interpretation in a very famous case called A.K. Gopalan case. आपको ईयर याद है इसका? 1950. A.K. Gopalan was a communist leader. उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है, आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ. ठीक है. So in 1950 when this question came before Supreme Court, that whether the constitution can be interpreted in the light of preamble, the Supreme Court said no. Constitution cannot be interpreted in the light of preamble क्योंकि preamble इसका part ही नहीं. Okay. But when the same question was asked in another case, that is the Berubari Union case, 1960, Supreme Court said कि not always, but when the court is in dilemma, in that case preamble can be used to interpret. और ऐसा इसलिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि एक यूएस सुप्रीम कोर्ट के जज थे जोसेफ स्टोरी. उनका स्टेटमेंट है कि preamble is the key to open the mind of constitution makers and therefore it can be used for interpretation जहां भी confusion है, but not always. Finally, in the Keshwanand Bharati case of 1973, Supreme Court said that all interpretation of the constitution has to be in the light of preamble. आप अंतर समझ रहे हैं? No, it should not be interpreted in the light of preamble. Only in case of dilemma, all interpretation has to be in light of the preamble. So पहला debate settled. Second question is that whether preamble is the part of the Indian constitution or not. इस पे सुप्रीम कोर्ट जब अपना ओपिनियन दे रहा था, इनिशियली दे सेड, बेरूबारी केस में क्वेश्चन पूछा गया, दे सेड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट द सेम क्वेश्चन व्हेन इट केम बिफोर इन द केशवानंद भारती केस, दे सेड यस, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई? सुप्रीम कोर्ट सेड कि वी हैड मिस्ड हिस्टोरिकल फैक्ट्स. जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट देखा तो हमने पाया कि प्रियम्बल को भी प्रॉपर मोशन के तहत वोटिंग करा के और अडॉप्ट किया गया था.
प्रॉपर वोटिंग, डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था। इनफैक्ट जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो जितने भी हमने लिखे, मैंने काफी शॉर्ट में लिखवाया, इन सब पे डिबेट हुआ था। इनफैक्ट दिस एक्सप्रेशन वी द पीपल, कुछ लोग थे जिनका ये कहना था कि हमें गॉड का नाम लिखना चाहिए इसमें, इन द नेम ऑफ गॉड वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप गॉड का नाम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो गॉड को मानते ही नहीं है। यानी आप सबको कंपलसरी कह रहे हैं कि इन द नेम ऑफ गॉड वी द पीपल ऑफ इंडिया, यू कैन नॉट। एक आप पहली लाइन कह रहे हैं कि इन द नेम ऑफ गॉड वी द पीपल ऑफ इंडिया, और तीसरी या चौथी लाइन है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो आप एक तरह से लिबर्टी देख रहे हैं कि आप माने या न माने, लेकिन पहले लाइन में आप कह रहे हैं इन द नेम ऑफ गॉड, दिस कैन नॉट। कुछ लोगों ने कहा कि इन द नेम ऑफ गांधी लिखेंगे, क्योंकि गांधी फादर ऑफ द नेशन। उसका भी ऑपोजिशन हुआ कि दिस इज नॉट राइट, डिफरेंट रीजंस थे। रीजन ये था कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंटायरली डज नॉट रिफ्लेक्ट द फिलॉसफी ऑफ गांधी। गांधी तो स्टेट में बिलीव ही नहीं करते थे, एंड देयरफॉर वी डिसाइड। तो हर एक चीज पे काफी डिबेट एंड डिस्कशन हुआ है। आफ्टर दैट वी अडॉप्टेड, सो इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनदर मेजर थिंग मैंने आपको लिखा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब 13 दिसंबर 1949 को रखा गया था, 1946 को, एंड प्रियम्बल वाज adopted in the last. Objective resolution से हमने स्टार्ट किया, and preamble we added in the constitution in the last. अब आप सोचिए कि यदि objective resolution से ही preamble है, then why the constituent assembly adopted preamble in the last? Because they wanted to bind the constitution with the preamble. Starting point और end point यदि same रहे, यानी पूरा का पूरा संविधान जो बना है वो preamble की ही लाइट में बना है। अदरवाइज क्या होता, आपने प्रियम्बल अडॉप्ट कर लिया और 3 साल की जो प्रक्रिया चली उसमें मे बी लॉट ऑफ चेंजेस वुड हैव, सो देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट सेड इट इज वेरी मच द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड क्वेश्चन, कैन इट बी अमेंडेड? सुप्रीम कोर्ट सेड यस, इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 360। व्हाई इट शुड बी अमेंडेड? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सेड कि यदि नहीं अमेंड करेंगे, मान के चलिए कि हमने कहा कि प्रियम्बल cannot be amended, rest of the constitution can be amended. It would mean कि preamble वहीं के वहीं रह जाएगा, rest of the constitution will change. So in order to make sure that preamble and constitution work together, preamble should also be amended. और preamble amend हुआ भी है 1976 में, that is in 42nd amendment. And the last question was that should the word secular and socialist be removed? Because mainly people from the rightist parties, Bharatiya Janata Party, they say that Indira Gandhi added it for political purposes. तो ऐसा नहीं है कि सेक्युलर शब्द या सोशलिस्ट शब्द जोड़ देने से इंडिया अधिक सेक्युलर हो गया और या फिर अधिक सोशलिस्ट हो। सो इट वाज जस्ट फॉर द पॉलिटिकल रीजन। सो लेट अस रिवर्स दिस, लेट अस रिवर्स दिस। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 4-5 months बैक हैज क्लैरिफाइड इन राम सिंह जजमेंट दैट इसको रिवर्स नहीं किया जाएगा, इट वुड रिमेन। इनफैक्ट जिन्होंने कहा था कि इन दो शब्दों को हटा दिया जाए, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि दीज टू वर्ड्स वर एडेड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट व्हेन इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड, और जब जो नॉर्मल टेन्योर होता है, नॉर्मल टेन्योर was from 1971 to 1976, जो कि अराउंड मार्च में खत्म हो गया। बट व्हेन दिस 42nd अमेंडमेंट वाज डन, उस समय लोकसभा को एक्सटेंड किया गया था। अंडर इमरजेंसी लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड, एंड देयरफॉर द पिटिशनर सेड कि ये तो फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है, आइडियली लोकसभा तो भंग हो जानी चाहिए थी, बट द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड दैट एंड दे हैव एडेड 42nd amendment. They have added these. So that assembly, that Lok Sabha which added these two words was not having the mandate of the people. और इसीलिए हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं एक पल को कि that Lok Sabha was not having the mandate क्योंकि extension दिया गया। बट उसके बाद जो लोकसभा आई in 1977, the Janata Party government, they brought 44th amendment, जिससे कि 42nd अमेंडमेंट की काफी चीजों को रिवर्स कर दिया गया। एंड दे डिसाइडेड नॉट टू रिमूव दिस, इनके पास तो मैंडेट था। सो इफ दे हैव डिसाइडेड नॉट टू रिमूव दिस, इट इज अ डेमोक्रेटिक डिसीजन, एंड द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट हैज नॉट बीन रिमूव्ड, इट विल
continue to be in the preamble. तो ये 4 points लिख देंगे. Just एक subheading लिखिए, debates related to preamble. Debates related to preamble. Points लिखेंगे. First point. Can the Constitution be interpreted in the light of preamble? Second, is preamble a part of the Constitution? Third, can preamble be amended? Fourth, should the word secular and socialist be removed? एक पैराग्राफ लिखेंगे. The Supreme Court clarified the first 3 debates in Keshwanand Bharati case Keshwanand Bharati case 1973, when it ruled that इसको भी पॉइंट्स में लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, any interpretation of the Constitution should happen in the light of preamble. Second, preamble is an integral part of the Constitution. इसको आगे चल के और भी केसेस में बताया, जैसे एक LIC केस होता है 1994 का, उसमें ये चीज फिर से कही. थर्ड पॉइंट, preamble can be amended as per the provisions of Article 368. Write a paragraph. Recently, the Supreme Court has also clarified
has also clarified that the words secular and socialist shall be retained in the preamble. ठीक है. Now एक लॉ है हमारे देश में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. ठीक है, नाम सुना होगा 1951. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. इसका एक सेक्शन है 29A क्लॉज 5. Now this section tells that any political party which wants to be registered in India will have to follow constitution, वो तो सभी बोल, will have to follow democracy, secularism and socialism. ये फॉलो करना पड़ेगा. Now there is no controversy on democracy. ठीक है, सबको डेमोक्रेटिक होना चाहिए. There is less controversy on the word secular. Okay, but the question is often raised कि किसी पार्टी को कंपल्सरीली सोशलिस्ट क्यों होना पड़े, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक फिलॉसफी. यदि मैं कैपिटलिस्ट होना चाहूंगा, then I should have this freedom that I will form a political party and I will openly say that I am a capitalist. ये भी लोगों पे डिपेंड करता है. लोगों को नहीं पसंद आएगा कैपिटलिज्म, they will reject me in the elections. But why should the philosophy of socialism should be forced upon? So this is the reason why even if you see parties like Bharatiya Janata Party, which is a rightist party, जो कि एक privatization को support करता है, ठीक है, yet in their constitution they say that they follow Gandhian socialism, क्योंकि ये compulsory कर. अब नेहरूवियन सोशलिज्म तो फॉलो करेंगे नहीं बीजेपी. So Gandhian socialism they follow. It is written very much in their constitution. Another thing, आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में थोड़ा सा आइडिया है. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मींस कि संविधान के कुछ हिस्सों को चेंज नहीं किया जाएगा जो कि बहुत बेसिक फंडामेंटल है. राइट, विल सी इन द लेटर चैप्टर. बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इट केम इन विच केस? केशवानंद भारती केस. कौन सा साल था? 1973. कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा. राइट, नाउ टेल मी वन थिंग, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट? है, इट इज द पार्ट ऑफ बेसिक, क्योंकि सबसे वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल है. सो इफ प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो कैसे इन 1976 42nd अमेंडमेंट से उसमें चेंज कर दिया गया? If preamble is the basic structure, ठीक है, और 1976 में 42nd अमेंडमेंट हो रहा है and we are adding two words, socialism and secularism, और integrity हमने ऐड किया, तो फिर कैसे चेंज कर दिया गया? We are adding not subtracting. अच्छा, ये बात ठीक है, you are close but any better refine? हाँ, ठीक है. हाँ, तो जो आपने कहा उन्होंने उस चीज को डिफाइन किया. बेसिकली द चेंज हैपेंड डेफिनेटली, but change happened in the direction of the constitution, not the change happened in the direction of the basic structure, not against the basic structure. यदि वहां से कोई चीज हटा ली जाती, यदि लेटेस्ट से डेमोक्रेटिक शब्द रखा हुआ है उसको हटा लिया जाता, then it would have been against the direction of basic structure. but यहाँ पे जो चीज implicit थी उस चीज को explicit कर दिया गया. so the preamble itself it is saying that liberty of thought, expression, belief, faith and worship, उसी चीज को हमने explicit करके वहां पे लिख दिया secular. Therefore Supreme Court said it is not against, it is a change in basic structure but the change is not against basic structure, it is in direction of the basic structure. ठीक है. Now give a new heading, fundamental rights. Fundamental rights.
Now you're right. What are rights? What are rights? कैसे डिफाइन करेंगे राइट्स को? राइट्स क्या? क्लेम ऑफ, क्लेम और प्रिविलेज, क्लेम और प्रिविलेज। प्रिविलेज भी आप शब्द यूज कर, अच्छा प्रिविलेज तो नहीं होगा। प्रिविलेज की खासियत यह है कि प्रिविलेज सबको नहीं मिलता, प्रिविलेज इज गिवन टू सम पीपल। और राइट्स की खासियत है कि ये यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। तो प्रिविलेज नहीं, इट इज अ क्लेम, ठीक है, क्लेम। एनीथिंग एल्स? और कैसे डिफाइन कर सकते? जस्टिफाइड क्लेम, ठीक है। एनीथिंग, एनीथिंग विच कैन बी जस्टिफाइड, विच इज रीजनेबल, राइट्स उनको बोलते हैं, ठीक है। So rights are basically claims on the state. You can say that rights are a kind of bridge or control of citizens on the state. And second question is कि rights एक ancient concept है या modern concept है? Rights modern concept, और duties ancient concept. So rights are actually the modern concept. यदि आप ancient history, ancient western political thought या फिर Indian political thought पढ़ेंगे तो आपको कहीं rights नहीं पढ़ने को मिलेगा. If you read about Socrates, Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, you will not find rights की बात नहीं हो रही. Even in ancient Indian political thoughts, अधिकार की बात नहीं हो रही है. Ancient concept जो है वो है duty. Duty has been existing since ancient time. For example, Plato का जो entire theory of justice है, it is based upon duty. कि what kind of duty has been allocated to different groups. Plato क्या कहता है? He is dividing the entire population into 3 groups. एक group है जो कि ruling class है, that means वो administration में जाएगा. Another group is जो सोल्जर क्लास है, जिनका काम है इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, ठीक है। सिमिलरली एरिस्टोटल यदि आप पढ़ेंगे, एरिस्टोटल तो सिटीजनशिप ही उनको देता है जो कि कुछ ना कुछ ड्यूटी कर सके स्टेट के प्रति. ही इज रिमूविंग चिल्ड्रन फ्रॉम सिटीजनशिप बिकॉज चिल्ड्रन कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट. He is removing women from citizenship because according to Aristotle, women cannot contribute to the political affairs. He is removing slaves from that because slaves नहीं कर सकते. He is removing old people from that. So केवल male members of the propertied class जो कि टैक्स जमा कर रहे हैं उनको citizens मानता है. So he is also not talking about rights. He is also talking about duties. एक और थिंकर है हॉब्स. हॉब्स भी कहता है कि स्टेट पावरफुल होगा और लोगों की ड्यूटी होगी स्टेट के प्रति. स्टेट की केवल एक ड्यूटी होगी, लोगों की जान की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस. रेस्ट एवरी ऑब्लिगेशन इज ऑफ द सिटीजंस. इंडिया में भी हम अधिकार की नहीं बात करते, हम ड्यूटीज, धर्म की बात करते. सो इफ यू सी दिस वर्ड धर्म, इट इज नॉट रिलीजन. इनफैक्ट जो सेक्युलर शब्द है उसका हिंदी वर्जन क्या है? व्हाट इज द हिंदी? नहीं, धर्मनिरपेक्ष नहीं. धर्मनिरपेक्ष हम बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं, बट क्या है? व्हाट इज रिटन इन द प्रियम्बल, द हिंदी वर्जन ऑफ? नहीं, सेक्युलर शब्द का मतलब क्या लिखा? वर्ड पंथ निरपेक्ष. पंथ निरपेक्ष. धर्म निरपेक्ष यदि कोई देश हो जाए तो ब्लंडर हो जाएगा. धर्म का जो मतलब है वो है ड्यूटी. धर्म का मतलब है लॉ. धर्म का मतलब है जस्टिस, है ना. हमारे साथ धर्म किया जाए, या फिर धर्म के अनुसार क्या करना चाहिए, या फिर आपका धर्म क्या कहता है, आपकी ड्यूटी क्या कहती है. राजधर्म, राजा का धर्म है कि ही विल ऑक्यूपाई मोर टेरिटरी. सबका अपना अपना धर्म होता है. सो धर्म निरपेक्ष का मतलब तो हो जाएगा कि आप अपनी ड्यूटी नहीं करना चाहते, या फिर आप लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, या फिर जस्टिस के खिलाफ. पंथ निरपेक्ष. हम जो राइट्स होते हैं, कम्युनल राइट्स,
आप उनको धार्मिक दंगे बोलते हैं क्या? सांप्रदायिक दंगे बोलते हैं। द हिंदी वर्ड इज सांप्रदायिक दंगे। यू डोंट से धार्मिक दंगे। धार्मिक दंगे तो हो ही नहीं सकते। धर्म इज, इनफैक्ट धर्म इज वन यूनिवर्सल आइडिया विच इज देयर इन एवरी रिलीजन। और धर्म शब्द को केवल हिंदू रिलीजन से जोड़ा भी नहीं जा सकता। धर्म इज दैट यूनिवर्सल आइडिया विच इज कॉमन टू एवरी रिलीजन। वो एसेंस है। गांधी यूज्ड टू से, गांधी जब कहते हैं कि राम राज्य की बात करते हैं गांधी, सो उससे हिंदू रिलीजन का कोई रिश्ता नहीं। राम राज्य मीन्स एन आइडियल स्टेट which will be based on dharma. What is dharma? The universal idea which is common to every religion. Christianity, Islam, Sikhism, Buddhism, सब में वो चीज common. So it is the panth nirpeksha. So basically duties are ancient, rights are modern concept. Rights are claim of the individuals. Rights are those tools which help to limit the state. राज्य क्या नहीं कर सकता, वो rights डिटरमाइन करते। राइट्स आर ऑल्सो द सोशल क्लेम। एक स्कॉलर ने डिफाइन किया है, राइट्स आर दोज पावर्स विच स्टॉप समबडी फ्रॉम इंक्रोचिंग अबाउट somebody's rights, not because he is powerful but because the society is powerful. Example, मान के चलिए कि देयर इज अ कम्युनिटी जहां पे 1000 people are living. Now let us say there is one person who is very strong physically, money wise, every way he is strong, and there is another person who is very weak socially, economically, politically very weak. Now can this strong person can go directly and hit him? जैसा भी चाहे कर सकते, नहीं कर सकते, they cannot do. Even is very powerful, let us say superintendent of police of a district, सबसे पावरफुल इंसान तो वही वो एसपी होगा वहां. But if he wants, can he just go and thrash this person? नहीं. यदि इन्होंने इनको लेटर से एक थप्पड़ मार भी दिया, is he allowed to hit him back? No. Why he cannot hit him back? He is powerful. He is physically powerful, socially, economically, politically powerful. Yet he cannot hit him, not because that he is afraid from him. Rather he is afraid from these 1000 people जिन्होंने इस बात की गारंटी दी है कि यदि इस कम्युनिटी के मेंबर को कोई भी परेशान करेगा, all will come to rescue that person. This is what we call as the claim, and this is coming out of the social contract. कि जिस दिन हमने संविधान अडॉप्ट किया, we the people, हमने ये गारंटी दी कि यदि किसी के भी राइट का वायलेशन होगा, we all will come to protect your rights. So that's why rights are not emerging from the state. State तो बस rights को protect करने के लिए आता है. Rights are emerging from constitution, and constitution is emerging from us. So it is the concept of rights. In Indian constitution, fundamental rights जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं part 3 of the constitution. Article कहां से कहां तक है? Any idea? 12 to 30. Very good. 12 to 35 fundamental rights. Now 12 to 35 articles देखेंगे. Article 12 is defining state, क्योंकि ये जो rights हैं मोस्टली स्टेट के अगेंस्ट है, तो आपको स्टेट को डिफाइन करना पड़ेगा. And then article 13 is defining what is the meaning of law. और आर्टिकल 14 ऑनवर्ड्स जो है फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट हो. तो इसको लिखेंगे सबसे पहले, वाटर राइट्स को लिखेंगे. राइट, राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ life which helps an individual to achieve his best.
rights are the limitations on the power of the state. Rights are modern rights are modern political concepts modern political concepts which emerged with the philosophy of liberalism. Next paragraph. In Indian Constitution, fundamental rights are placed in Part 3 of the Constitution. Part 3 of the Constitution, in bracket, right, Article 12 to 35. Fundamental rights are enforceable. Okay. So I made you write that it belongs to the liberal philosophy, क्योंकि लिबरलिज्म ही कहता है लिमिटेड स्टेट, और जब लिमिटेड स्टेट यानी राइट्स, यदि आप कम्युनिस्ट कंट्रीज की बात करेंगे तो ड्यूटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. दे डोंट बिलीव इन गिविंग वेरी स्ट्रॉन्ग राइट्स. आप चाइना का एग्जांपल ले लीजिए. चाइना इज नॉट गिविंग वेरी, उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स का मेंशन है, but they have not given very strong rights there. Soviet Union duties were more important than rights. So always it is a philosophy of liberalism. ठीक, इसीलिए part 3 of the Indian Constitution overlaps with the liberal philosophy. ठीक है. Now right, next paragraph. Article 12 defines state. Look at this article. Article 12 जो कि पहला है, it says that in this part, यानी ये definition केवल इसी part के लिए है, part 3 के लिए. In this part, unless the context otherwise requires, the state includes. That means it is an inclusive definition. Includes. ये exhaustive definition नहीं है. It is an inclusive. For example, यदि मैं कहूँ कि student includes, इनका नाम मैंने लिया, इनका लिया, इसका मतलब है कि there is a scope that I may include others also. But यदि मैं कहूँ student is, इनका नाम, यानी बस close list, exhaustive हो जाएगा. So it says that state includes government and parliament, government and the legislature of each state, and local bodies or other authorities. Other authorities Supreme Court ने define किया है. ठीक है. Now here the question is, when we are saying other authorities, पहले इसको लिख देंगे, just right. According to Article 12,
according to Article 12. State includes Parliament and Union government, comma, state legislature and state government, local or other authorities. Now here when we say other authorities, so does it mean that you can include anything under this category? कर सकते हैं क्या कुछ भी? मतलब अदर अथॉरिटीज है तो क्या मैं किसी दिन मान के चलूं कि इन्फोसिस कंपनी को मैं लिख दूं यहाँ पे, अदर अथॉरिटी इन्फोसिस भी आ सकता है, या फिर क्या मैं अदर अथॉरिटीज की जगह शुभ्रा रंजन आईएएस लिख दूं? क्या वी कैन वी कम इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बताया. एक प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ एजुस्डम जेनेरिस. द प्रिंसिपल ऑफ एजुस्डम जेनेरिस. नाउ इट मींस दैट जब भी ऐसा कुछ टर्म आता है दिस एक्सेट्रा, तो जो एक्सेट्रा या फिर अदर अथॉरिटीज हम रेफर करते हैं, इट रेफर्स टू दोज अथॉरिटीज जो कि उसी नेचर के. टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट अस से यू आर गोइंग टू बाय समथिंग फॉर दिवाली. ठीक है, योर डैड गिव यू मनी, क्रेडिट कार्ड ही दे दिया आपका कि आप दिवाली के लिए लाओ. उन्होंने कहा कि क्रैकर्स, जो दिए होते हैं, दिया, स्वीट्स एंड अदर थिंग्स, क्रैकर्स, दिया, स्वीट्स एंड अदर थिंग्स, इतना लेके आओ. और आप जब लौटे तो आपने क्रैकर्स, दिए, स्वीट्स लिया और एक आईफोन भी खरीद लिया. पिताजी पूछेंगे आईफोन क्यों? तो आपने कहा कि आपने कहा था ना अदर थिंग्स, तो जो अदर थिंग्स है उसमें हमने आईफोन ले लिया. नाउ डज इट साउंड लॉजिकल? नाउ here the principle of adjustum generis will apply, कि जब भी आप ऐसे वर्ड्स को इंटरप्रेट करते हैं तो वो वैसा ही रहेगा जो पहले तीन वर्ड्स रहे. सो जब भी लेट अस से यू गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स, ओके, और कहा गया कि वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स यू गेट, तो अलोंग विद वेजिटेबल्स यू विल गेट सम धनिया मिर्ची, राइट? ऐसा नहीं है कि आप कुछ और जाके खरीद लाए, क्योंकि इट शुड बी ऑफ दैट नेचर. सो फर्स्ट थिंग दैट it should be of that nature, and Supreme Court has said that वो गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बना रहना चाहिए. तो स्टेट डिफाइन हो गया. नाउ राइट सेकंड, राइट, आर्टिकल 13 says that any law which is inconsistent with fundamental rights shall be declared void. VOID, void. ये सबसे पावरफुल, वन ऑफ द सबसे पावरफुल आर्टिकल्स है जो मैंने आपने लिखा कि द फंडामेंटल राइट्स आर फ्रॉम 12 to 35. इसमें दो ही आर्टिकल्स हैं बिकॉज ऑफ विच दिस पार्ट 3 इज इफेक्टिव, दैट इज आर्टिकल 13 and article 32. Out of all the articles that is given here, यदि आप उसमें से आर्टिकल
13 और आर्टिकल 32 हटा देंगे, देन फंडामेंटल राइट्स आर यूजलेस। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 आपको रेमेडियल मेजर्स देता है। यदि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो, आपको क्या करना है? यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड आर्टिकल 13 says that if there's a law which is going against the fundamental rights, then that law would be declared null and void. तो यदि सरकार कोई कानून बनाती है, और सर जैसे कल हमने डिस्कस किया कि लेट अस से इन 2024 गवर्नमेंट इज कमिंग टू पावर विद supreme majority, 100% majority. Now next election will be in 2029, but does that mean that during these 5 years government can do anything? No. For example, let us say government is making any law which is going against fundamental right, it will be challenged in the court under article 13. Article 13 says that any law which is against the fundamental right shall be declared null and void. Outrightly उसको null and void declare कर दिया जाएगा, या फिर to the extent it is inconsistent. तो कभी कभी क्या होता है कि you don't require to declare the entire law as void. हो सकता है उसका कुछ part which is not consistent with the fundamental rights would be declared inconsistent and void. So article 13 is very powerful. Article 32 is very powerful. So whenever you approach the court, आप हमेशा 13 या फिर 32 के थ्रू ही पहुंचते हैं, ठीक है? Now right, next, give us subheading. Subheading: right to equality. Right to equality. ठीक है, right to equality. इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे आर्टिकल 14 to 18. Article 14 to 18. ठीक है. In this, write a paragraph. Article 14 states that the state shall not deny any person equality before the law or the equal protection of the laws, or the equal protection of the laws. अब यहाँ पे एक चीज बतानी थी कि 12 में डेफिनेशन ऑफ द स्टेट दिया गया है. डीपीएसपीज आर्टिकल्स कहां से कहां तक है? एनी आइडिया? डीपीएसपी किस पार्ट में है? पार्ट 4. आर्टिकल कहां से कहां तक? 36 to 51. 51 बिकॉज 51A इज फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना. सो 36 से 51 में, वहां पे 36 में फिर से स्टेट को डिफाइन किया गया. दिस इज 36. क्या? इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इज दिस. क्यों फिर से डिफाइन करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि जब पहले डिफिनेशन दिया गया था उसमें लिखा गया था इन दिस पार्ट. दैट मींस दिस डिफिनेशन वाज वैलिड ओनली इन पार्ट 3, और इसीलिए वो डिफिनेशन सेम है, क्योंकि यहां भी आपको आर्टिकल 36 इज टेकिंग यू बैक देयर ओनली. ये ले रहा है कि स्टेट का वही मतलब होगा जो पार्ट 3 में दिया हुआ है, बट ये लिखना इसलिए जरूरी है बिकॉज टेक्निकलिटीज. इफ यू डोंट राइट देन फॉर डीपीएसपी स्टेट का कोई मतलब नहीं. अगेन द डेफिनेशन. एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, आर फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स ऑल्सो? Some are available. Which are not available to non citizens? 19. ठीक है, ठीक है. और भी नहीं 17 है. 17 तो अनटचेबिलिटी से है ना, तो ऐसा थोड़ी हुआ कि फंडामेंटल, हाँ फॉरेनर्स को अनटचेबल हम मान सकते हो, तो नहीं. 18 इज नॉट. 15, 16, 19, 29, 30.
15, 16, 19, 29, 30 ये आएगा बारी बारी से। 15 जो है 16 जो है, 17 तो वही अनटचेबिलिटी है, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर इट, ठीक है। एंड वाई, कैसे हम कह सकते हैं कि ये फॉरेनर और ये नॉन सिटीजन्स को नहीं अवेलेबल है? ऑन व्हाट बेसिस कैन वी से दैट इट इज नॉट अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स? नहीं, पर ये पता कैसे चला? जैसे हमारे पास 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब इसमें से कौन सिटीजन्स के लिए है, कौन नॉन सिटीजन्स के लिए, मैंने बता तो दिया, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। लेकिन ये पता कैसे चलता है कि नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है या फिर सिटीजन्स के लिए, कैसे पता चलता है? तो ह्यूमन राइट्स तो सबको मिलने चाहिए ना। हाँ हाँ, तो ये तो सब्जेक्टिव हो जाएगा ना, टैक्स पेयर का पैसा तो हर जगह लग रहा है, ठीक। तो दिस कम्स फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू सी दीज आर्टिकल जो मैंने बताया 15, 16, 19, 29, 30, इनमें शब्द लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं सिटीजन शब्द आया होगा। देखिए लिखा हो ना, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। 16 में फॉर ऑल सिटीजन्स है ना, 19 citizens. Okay, similarly you will find that here also there will be the word of citizens, but बाकी जितने आर्टिकल्स होंगे यहाँ पे पर्सन शब्द आता है, पर्सन। सो व्हेन पर्सन दैट मीन्स सबके लिए अवेलेबल है, जब सिटीजन तो क्लियर ही हो गया कि केवल सिटीजन्स, ठीक है। नाउ लुक एट दिस वेरी फंडामेंटल आर्टिकल, आर्टिकल 14। अब कॉन्स्टिट्यूशन की ये ब्यूटी है कि 2 लाइन में कोई आर्टिकल लिख जाता है, ठीक है, but the meaning and the interpretation is very effective. Now when you see this article, it says that the state shall not deny to any person equality before law, है ना। लेकिन यदि मैं बात करूं रिजर्वेशंस की, तो इक्वालिटी डिनाई कर रहा है। किसी के लिए कट ऑफ 90 है, किसी के लिए कट ऑफ 80 है, किसी के लिए 70 है, तो वहां तो इक्वालिटी डिनाई हो रहा है, यानी आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है। कैसे? होता है एरिस्टोटल का कहना। हाँ, लेकिन ऐसा मैं क्यों मानूं? यदि मेरे को मान के चलो कि सेम एग्जाम में 90 पे क्रॉस करने को मिल रहा है और किसी को 70 पे, तो मैं इस चीज को, और ये कैसे डिटरमाइन होगा कि भाई इक्वालिटी है नॉट? ये द मेन रीजन फॉर दिस इज, यू आर क्लोज टू दैट, द मेन रीजन इज कि आर्टिकल 14 2 शब्दों का यूज कर रहा है, 2 टेक्निकल वर्ड्स। इट इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस। कल हमने डिस्कस किया था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जैसे, कानून की उचित प्रक्रिया, ठीक है, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी ये जो फोकस करता है, दिस इज फोकसिंग ऑन प्रोसेस, दिस इज फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव, this is narrow concept of justice, this is a comprehensive or substantive concept of justice, है ना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस, कि लास्ट में कानून सभी के लिए इक्वल एमर्ज हो, यानी यदि स्टार्टिंग पॉइंट अलग है तो उनके लिए एंड पॉइंट भी अलग होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स फॉर बोथ द थिंग्स, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो ऐसा नहीं है कि कोई बिना एग्जाम दिए ही चला जाएगा, बट ऑल्सो द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसका दूसरा एग्जांपल आप देते हैं कि मान के चलिए कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि सभी को प्रोटेक्ट किया जाए, इजंट इट। अब मान के चलिए कि मोदी जी निकलते हैं, Z++ कैटेगरी उनको सिक्योरिटी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आती हैं तो पूरा सिक्योरिटी रहेगा, है ना। अनंत अंबानी द्वारका जा रहे हैं पद यात्रा करते हुए, उनके आसपास सिक्योरिटी है, ठीक है। मुकेश अंबानी को सिक्योरिटी है, सलमान खान को सिक्योरिटी है। क्या आप भी रोड पे निकलते हैं तो आपको इतनी सिक्योरिटी मिली है क्या? नहीं मिली है ना। आपके साथ भी कोई पुलिस वाला चलता है? नहीं चलता। व्हाई? बिकॉज
इक्वालिटी बिफोर लॉ जरूरी नहीं है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जरूरी है। लॉ ये कहता है कि सभी को सुरक्षित रखा जाए। यदि कल को आपके लाइफ को भी वैसा थ्रेट रहेगा, द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सिक्योरिटी। लेकिन आपकी लाइफ आपको कोई पूछ नहीं रहा है और आप कहेंगे उनको पुलिस चाहिए साहब, क्या फर्क? तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इजंट इट? सो लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ इज नॉट इक्वल टू जस्टिस। लॉ है इसका मतलब न्याय नहीं होता है। मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ द लॉ इनजस्टिस हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ मेनी डिस्क्रिमिनेशन। सो कॉम्प्रहेंसिव आइडिया ऑफ दिया। इसको आपने लिखा क्या पूरा? ये शब्द इसमें एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन provides for substantive equality and not just procedural equality, not just procedural equality. The reservation system in India is an example of substantive equality. ठीक है, next paragraph, right? Article 15 states that the state shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. Now article 15 is particularly important. सबसे पहली बात है कि article 15 clause 1 कहता है कि there should not be any discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Article 15 clause 1 कहता है कि ऐसा discrimination होना नहीं चाहिए। Your question would be कि सर लेकिन discrimination तो होता है, कास्ट के आधार पे स्टेट ही करता है डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मैंने बताया एग्जाम। रिलीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये कैसे? इट इज अगेन बिकॉज ऑफ फॉर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, तो वो भी कहीं संविधान में लिखा होना चाहिए ना। सी एनीथिंग दैट गवर्नमेंट डज इट कैन नॉट हैपन विदाउट इट बीइंग मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे देश में कुछ भी होता है तुरंत मैटर कोर्ट तक जाता है। मंडल कमीशन जब आया, मैटर वेंट टू द कोर्ट, तो कोर्ट तो संविधान ही देखेगा ना, and accordingly it will interpret. So article 15 में ही article 15 clause 3 जो है वो कहता है कि there will be special rights for children and women. तो यदि आप कहीं जाते हैं and there will be a separate smaller line for women or there is a different separate facility coach, यदि आप मेट्रो में जा रहे हो there will be a separate coach for women, आप नहीं जा सकते कोर्ट में कहते हुए कि अलग से रिजर्व क्यों है, because Constitution says that for children and women there will be special provision. In fact, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री है हमारे गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपने नहीं सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ मेन डेवलपमेंट नहीं है,
बिकॉज संविधान नहीं कहता है। हो सकता है एक समय आएगा कि संविधान को बोलना पड़ेगा, जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बट अभी तक तो संविधान यही कहता है कि देयर शुड बी स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 15 clause 4, the most important. It says that there shall be special provision for scheduled caste, scheduled tribe, socially and educationally backward classes. Socially and educationally backward classes. तो जो रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है ना, इट इज emerging from आर्टिकल 15 clause 4, आर्टिकल 15 clause 4, ठीक है। Was it originally in the constitution? No. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 15 clause 3 तक था, बट एक बहुत फेमस केस हुआ था, चंपकम दुराई राजन केस। पढ़ा है इसके बारे में? चंपकम दुराई राजन केस किस चीज से रिलेटेड था? सो बिफोर इंडिपेंडेंस जो मद्रास प्रोविंस था, मद्रास प्रोविंस, थ्रू द गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ 1927 रिजर्वेशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि रिजर्वेशन सिस्टम, रिजर्वेशन का प्रोविजन महाराष्ट्र और साउथ में बहुत पहले हो चुका था। 1902 इन कोल्हापुर, छत्रपति शाहू जी महाराज ही got reservation for the backward classes. 1921 Mysore, 1927 Madras, so it was done. So 1927 में ये गवर्नमेंट ऑर्डर था कि people from lower caste they will get reservation. Okay, now this worked very well till 25th January 1950, बिल्कुल चल रहा था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भी द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स, एंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 15 clause 1 said what? There shall not be any discrimination on the basis of caste. बट यहां पे द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो रहा है, ठीक है। एक दूसरा आर्टिकल है हमारे संविधान में, आर्टिकल 29 clause 2, अभी लिखना नहीं है, आगे लिखना है। 29 clause 2 जो ये कहता है कि यदि if there is a institution which is being funded by the government then you cannot be denied admission there, ठीक है। So basically this government order 1927 जो कि caste based reservation दे रहा था, it is violating it. So Champakam Dorai Rajan was a lady, Brahmin lady. She wanted to take admission in a medical college, but she was denied admission because the seats were reserved. She approached the High Court. High Court कि भाई Article 15 clause 1 says that you cannot be discriminated on the basis of caste. I am being discriminated. She told that Article 29 clause 2 says that in any government funded institute you cannot be denied admission on the basis of caste. I am being denied. High Court and then Supreme Court said that Champakam Durai Rajan is right. She cannot be denied the admission because Article 15 clause 1 says no discrimination on the basis of caste. Now it created problem because government, being a socialist government, state wanted to create a situation wherein people who are from the backward communities उनको reservation दिया जाए, but संविधान तो reservation देने से रोक रहा है, and therefore the first constitutional amendment that was done in the very first year when we adopted was this amendment, जिस और भी changes किए गए, but Article 15 clause 4 जोड़ा गया और कह दिया गया कि despite what is written in 15 clause 1, despite what is written in Article 29 clause 2, there can be special provision for scheduled caste, scheduled tribe, socially and educationally backward classes. So you will see that Article 15 clause 3 तक था, ये आप देखेंगे कि नया जोड़ा, anything which is written in bracket has been added later on.
क्लॉज 4 क्या कहता है? ये तो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए मैंने बताया। 4 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल, मतलब नथिंग इन आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29, क्योंकि चंपकम दोराई राजन उसी को लेके गई थी। Nothing in this provision shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes, जिसको कि हम बोलचाल की भाषा में ओबीसी कहते हैं। संविधान उसके लिए socially and educationally backward classes. These two words are important, socially and educationally. That's why you will find that even those communities who are economically well off, they have been given the reservation, क्योंकि यहाँ पे सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात हो रही है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात नहीं हो रही। ठीक है, क्लास ऑफ सिटीजंस और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, सो द रिजर्वेशन केम थ्रू दिस, और फिर लेटर ऑन इसमें चीजें जोड़ी गई। ठीक है, जिसमें एक सबसे रिसेंट एडिशन हुआ जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किस अमेंडमेंट से आया? 103। तो आप देखेंगे 103 से एक क्लॉज 6 जोड़ा गया, wherein 10% seats were reserved for economically weaker sections। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख देंगे। लास्ट लाइन क्या लिखी आपने? 15, नेक्स्ट राइट राइट राइट। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इसी में लिखें। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 1 लिख दिया ना, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। हाँ, अच्छा 4 तक भी लिख लिया, चलो देन तो इट्स फाइन। इसी में लिख देंगे रिसेंटली थ्रू 103rd amendment, recently through 103rd amendment, 10% reservation was granted to economically weaker sections. Economically weaker sections. Acha, tell me one thing, if I am from scheduled caste, can I get the benefit of EWS also? Yes? No? अच्छा, मुझे अपना रिजर्वेशन छोड़ना। यस, आप दोनों रिजर्वेशन एक साथ नहीं ले सकते, आपको एक ही रिजर्वेशन, यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है संविधान में, है ना, ये लिखा हुआ है दैट any special provision for the advancement of any economically weaker section of the citizens other than the classes mentioned in clause 4, और वो classes कौन सी थे? SC, ST, OBC। now right, next article 16। हाँ, नहीं, वो डोमिसाइल का, it is not connected to domicile, it is connected to in fact an article in the constitution कि जो scheduled caste है, this term scheduled caste has it been defined in the Indian constitution? इसका definition कहीं दिया हुआ है? जैसे हमने देखा state का definition दे रखा है, तो ऐसा definition कहीं scheduled caste का दे रखा है? दिया रहेगा ना, कैसे नहीं दिया रहेगा? इतना बड़ा term है, scheduled caste को इतने benefits दिए जा रहे हैं, how can you not define scheduled caste? हर एक चीज जो हम संविधान में यूज करते हैं उसको डिफाइन करना ही पड़ता है, राइट? सो इट हैज बीन डिफाइंड। ठीक है, तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, शेड्यूल कास्ट का डेफिनेशन दिया गया है आर्टिकल 341 में, लिखने की जरूरत है, बस समझ लो। 341 का जो डेफिनेशन आप 341 पढ़ेंगे तो 341 में एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, इट विल टेक यू टू अनदर आर्टिकल दैट इज 366 क्लॉज 24। जब आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे दो बातें लिखी हुई है, दैट द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर। सेकेंड क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई दैट लिस्ट।
इतनी चीज लिखी हुई है। एज अ रिजल्ट प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर निकाला जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर SC 1950 एंड इन दिस देयर इज अ लिस्ट गिवन जो कि स्टेट वाइज सेग्रीगेटेड है, दैट मींस बिहार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, and state wise the name of the scheduled caste has been written. If the scheduled caste is given the SC status in both the states UP and Bihar, दोनों जगह वो मेंशन मिलेगा, ठीक है। सो यदि वो नहीं मेंशन रहे किसी स्टेट में तो दे विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। इस ऑर्डर में एक और चीज खास बात लिखी हुई है कि शेड्यूल्ड कास्ट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली अमंग्स हिंदूज, सिख and there's another group बुद्धिस्ट। केवल इसी में शेड्यूल कास्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो दलित कन्वर्ट्स होते हैं, आई वॉज अ शेड्यूल कास्ट, आई वॉज अ हिंदू, आई कन्वर्टेड टू इस्लाम और आई कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। अब कानून ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट इन्हीं 3 रिलीजन में होंगे, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म। यदि मैं इस्लाम या फिर इफ आई बिकम अ क्रिश्चियन आई विल लूज द स्टेटस ऑफ शेड्यूल कास्ट। और इस पे भी काफी डिबेट चल रहा है कि जस्ट बाय चेंजिंग द रिलीजन द डिस्क्रिमिनेशन डज नॉट गो, सो आई शुड आल्सो बी गिवन द शेड्यूल कास्ट स्टेटस। सो दैट प्रॉब्लम दैट यू आर सेइंग कि एक कम्युनिटी को एक स्टेट में शेड्यूल कास्ट स्टेटस रहता है दूसरे में नहीं, बिकॉज हो सकता है प्रेसिडेंट ने उसको उसी स्टेट में मेंशन किया होगा लिस्ट में, ठीक है। चलो एक ये कंप्लीट करेंगे। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 states that there shall be equality of opportunity, there shall be equality of opportunity in matters of public employment, in matters of public employment for citizens of India. No citizen shall be discriminated, shall be discriminated on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them, or any of them, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि देयर कैन बी अ सिचुएशन वेर इन थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन, जो कि इसके एक्सेप्शंस में दे रखा है कि देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जांपल लेट अस से गवर्नमेंट इज मेंटेनिंग अ टेंपल, तो टेंपल है तो वहां पे कोई हिंदू धर्म का ही होगा जो पुजारी बनेगा वहां पे। इफ यू लुक इनटू द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मुस्लिम कैन नॉट क्लेम, और या फिर कोई मॉस्क है तो हिंदू कैन नॉट क्लेम कि हम वहाँ के जो मौलवी बनेंगे, तो वहाँ पे हो सकता है। सिमिलरली देयर इज अ प्रोविजन हियर दैट इफ द पार्लियामेंट वांट्स कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस आपको देनी पड़ सकती है, इसमें नहीं, आगे लिखा हुआ है आर्टिकल 23 या 24 में
कि कभी कभी क्या होता है कि if the parliament wants you will be forced to give the compulsory military service, जैसे कि इजराइल में है कंपल्सरी है, तो let us in a war situation या फिर जैसे कोविड आया, so maybe the government wants people to volunteer. Now there can be discrimination on the basis of sex and age, ठीक है, सेक्स के बेसिस पे डिफरेंस हो सकता है, because maybe there will be some challenging situation wherein government finds that women are not allowed suitable to go, वहां पे discrimination allowed है, for example military and all it is allowed. So this is providing you the scope for equality in the government services, ठीक है. अब इसमें clause 4 है जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, which is saying that there shall be special provision for the backward classes. रिजर्वेशन यहीं से आता है इन द गवर्नमेंट सर्विसेज. इट इज नॉट द अमेंडेड आर्टिकल, यानी ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन है. तो यदि हम रिजर्वेशन की बात करें, सो देयर आर 3 टाइप ऑफ रिजर्वेशंस दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. वन इज द रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर. इसमें ओरिजिनली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए there was reservation under article 330 and 332 originally, it was not added later. Second kind of reservation is reservation in public employment. ये भी originally हमारे संविधान में था, ठीक है, it is originally there, but what was added later on was that reservation in the promotion was not there, बट बाद में रिजर्वेशन इन प्रमोशन जोड़ा गया, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास. एंड द थर्ड काइंड ऑफ रिजर्वेशन इज ऑफ द हायर एजुकेशन. सो इन टर्म्स ऑफ एवेन्यूज जहां जहां पे रिजर्वेशन ही ऐसा है, इन टर्म्स ऑफ हु आर गेटिंग द रिजर्वेशन, इट इज द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. It is the socially educationally backward classes. It is the EWS category people, and women are also getting reservation. Women को जो reservation मिलता है, that is just in the political representation. Women are not getting reservation in higher education or in public employment. They are getting reservation just in the political representation, क्योंकि 73rd 74th amendment जो हमने जिक्र किया and the 106th amendment, they are providing reservation for women in grassroots panchayat level and state legislature and Lok Sabha. So these are the reservation. We'll see in the next class. Thank you.